अरे आप साइड। मैडम से डर रहे हो कि इतना घबरा क्यों रहे हो? वैसे नहीं तो बड़ी दबंगाई से बहस करती हो। नहीं, डर प्राइवेट लग रहा है तो ऐसा बताओ फिर। आज कुछ बचा है मैडम? आज काउंसलिंग में कैसे भाग लेने के लिए कहेंगे तो 10 साल बाद संविदा शाला शिक्षक की तो पद भी समाप्त हो गया। 3 ईयर लॉ होता था जिसमें हमने किया था जी। ग्रेजुएशन के बाद। पहले ग्रेजुएशन करेंगे, बीए बीकॉम एलएल बीएससी जो भी किया है, एंड उसके बाद 3 साल का एलएलबी होता था। बट ग्रेजुएट इन लॉ जो है होने के लिए ग्रेजुएट इन अदर सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। वही मैंने आपका पक्षकार जो है वो संविदा शाला शिक्षक नहीं, कुछ और बड़ा आदमी बनने के लिए डेस्टिन्ड है। प्लीज योर लॉर्डशिप। आज कुछ बचा है मैडम? आज काउंसलिंग में कैसे भाग लेने के लिए कहेंगे तो 10 साल बाद। लॉर्डशिप आई हैड ओनली बिकॉज कोई स्टे था आपके पक्ष में? स्टे ये था लॉर्डशिप 26/2/2014 को। दैट्स the matter was admitted, and in the meanwhile, in case any counseling is held before the next date of listing, the petitioner will be permitted to participate in the same provisionally subject to the order passed in this petition. So उसके बाद के मैंने ये documents file किए to demonstrate that there are vacancies available. So pursuant to those vacancies, Lordship, I made made a prayer before this honorable court that pursuant to the vacancies that are available, Lordship, I may be considered. So on 7/4/2022, this honorable court had directed only to the limit because they have not filed reply in this case. Although 7/4/22 7/4/22, Lordship. वहीं भेज देते हैं आपको उसी कोर्ट में। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हाउ कैन दिस डायरेक्शन बी इशूड इन योर फेवर आफ्टर 10 years? ऐसे डायरेक्शन नहीं है लॉर्डशिप। चलिए आप अपने मैरिज पे बताइए। चलिए क्या राइट है आपका? मेरा इतना कहना है that this matter is of 2013। जी, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा आज कुछ बचा नहीं है इस केस में। सर इसलिए मैंने ये एक एप्लीकेशन फाइल की थी। There are vacancies available। अब संविदा शाला शिक्षक के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं जी, they are not being conducted। संविदा शाला शिक्षक की तो पद भी समाप्त हो गया। अब जो हो गए अध्यापक और सहायक अध्यापक में हो गए हैं merged, they have been absorbed lordship, but as on date lordship D1 I filed IE number 85। Madam, please try to understand lordship, you will have to show that post of संविदा शाला शिक्षक मैं वही कह रही हूँ lordship, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। बताइए annexure डॉक्यूमेंट सॉरी IE नंबर 8524। 8524 ये इनने रिप्लाई में यही कहा था कि दोनों मर्ज हो गए हैं और प्राइमरी एजुकेशन एंड नॉट बीइंग गवर्न। मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाया था फ्रॉम द वेबसाइट दैट संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 के पोस्ट अवेलेबल हैं। अगेन दीस पोस्ट आई मे ओनली बी कंसीडर ओनली दिस मच आई एम सेइंग। बताइएगा भाई आपकी पोस्ट मर्जर के बाद पोस्ट ऑफ मालूम दे आर नॉट हैविंग डिजायर एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मालूम जी। तो yesterday my lord had decided same matter my lord जी। secondly my lord they are file the document regarding private अरे आप मैडम से डर रहे हो कि इतना घबरा क्यों रहे हो? वैसे तो बड़ी दबंगाई से बहस करती हो। नहीं सर, ये D2 जो है साहब ये प्राइवेट डर लग रहा है तो ऐसा बताओ फिर। नहीं साहब नहीं सर, ये जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो फाइल किया है प्राइवेट वेबसाइट का है सर। देयर इज नो रिलायबल। यही तो इसका जवाब दे तो पूछ लो। मैं जवाब हमने दे दिया। इसका जवाब नहीं दिया लॉर्डशिप। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ कर दिया सर 8524/2022 आई फाइल्ड इट ऑन 20 जून 2022। 8524 का जवाब दे दिया आपने क्या? नहीं लॉर्डशिप है नहीं रिकॉर्ड पर, पूछ लो। नहीं 1054 आप 22 में लो आइए। उसमें भी यही बात उठाई थी क्या? नहीं वो उसमें मैंने ये ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ उसमें गेस्ट फैकल्टी जब ही था। गेस्ट फैकल्टी से भी आर नॉट। चलिए उसमें शुरू से देखते मैडम, शुरू से देखते चलिए। इसको वेरीफाई करवा लें। अगर ये पोस्ट अवेलेबल नहीं है देन देयर इज नो क्वेश्चन लॉर्डशिप। लंच के बाद बता दीजिए सर इनका राइट क्या है पहले तो ये बता। लंच के बाद बता दीजिए जी सर। तो फिर राइट भी देखेंगे, बिना राइट देंगे हम नहीं देंगे कुछ जी। इसीलिए हमने कहा 7/4 का ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। मैं देख 2:15 बजे। And social studies, all these are subjects related to social science itself। जिसमें मेरा ग्रेजुएशन है उसी में मैंने बीएड किया है लॉर्डशिप जी। हिंदी एंड इंग्लिश आर कॉमन सब्जेक्ट्स लॉर्डशिप। फिर से पढ़िएगा एक बार दोबारा से आपकी बीए की डिग्री को। बीए की डिग्री को पेज 29 पर। शायद आई एम एबल टू शो यू दैट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट करेक्ट। Lordship, if my lord will show, then it will obviously. But if the respondent council come and show something, then I will demonstrate it otherwise. But to contravene my lord, Lordship will be a. We are just trying to assess what is the correctness of this. Please, so, abhi I have not closed your options. Lordship.
पहला सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, लॉर्डशिप, दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद में आपके इन 3 सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया और ऊपर फाउंडेशन कोर्स है, आई एम नॉट टेकिंग कोर्स दिस थिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट, तो ठीक है, जनरल सब्जेक्ट है। तो मेनली आपका जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उसके कारण आपको सोशल साइंस का माना गया, क्योंकि सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि सोशल साइंस का हिस्सा होते हैं, लॉर्डशिप, ठीक है। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो सोशल स्टडीज जो है यस, वह डिफरेंट है, वो मेथोडोलॉजी पर है वो। यस लॉर्डशिप। अब सर जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो शैक्षणिक योग्यता बोली गई है हाँ। वो है संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष। हाँ। अब ये बोल दें कि समकक्ष नहीं है। हाँ। जो हमारी बीएड सोशल स्टडीज में इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और हमने इसमें कम्युनिटी एक्टिविटीज की है विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू सामाजिक, विच इज ऑल्सो सोशल जी। in terms, because either it is social or it is social science or it is science. There are only two streams. जी। Subjects for teaching purposes, there is only one subject जो उसने social studies लिया है। तो ये संबंधित विषय जो सामाजिक विज्ञान है उसमें स्नातक उपाधि या समकक्ष नहीं है, ये ऐसा बोले नहीं है। दिस इज नॉट बीन कॉन्ट्रवीन्ड एंड एडमिटेड पोजीशन। जी। May I submit, madam? हाँ प्लीज। ये सबमिशन बट देयर इज नो रिटर्न ऑन रिकॉर्ड। रिटर्न है सर, हाँ रिटर्न पढ़िए। रिटर्न फाइल हुआ था मेरा 2020 में, जी जी पढ़िएगा। 25/6/20 को फाइल किया था जी। The query by the petitioner counsel, my lord, that जी। my first contention is that, my lord, जी। in excerpt, page number 29 is the, my lord, BA degree. हाँ ठीक है। They are stating that ki double graduate there, my lord. जी। So BA part 3 degree, page number 29, my lord. यस। This is the स्नातक उपाधि, हाँ my lord. जी। My contention is that, my lord, जी। page number 30 is the degree mark sheet of the BEd, my lord. जी। बीएड की परीक्षा आप तब दे पाएंगे जब आप स्नातक हो जाएंगे। जी। My submission is that, यस यस। BEd is the not a स्नातक उपाधि। जी। After स्नातक they approach to the BEd degree। नहीं नहीं, स्नातक उपाधि तो है, स्नातक, लेकिन अरे कोई बात जी। सुन लीजिए। आपको हाँ स्नातक है पर एजुकेशनल स्नातक है। एजुकेशन में स्नातक हाँ है। ये स्पेशलाइजेशन है। सोशियोलॉजी में स्नातक नहीं, वो सोशल साइंस में स्नातक नहीं है, ये एजुकेशन में स्नातक और है। ये डबल स्नातक 3 ईयर लॉ होता था जिसमें हमने किया था जी। ग्रेजुएशन के बाद। आप लोग 5 ईयर वाले होंगे। नहीं हम 3 ईयर आप भी 3 ईयर वाले, तो वो भी ग्रेजुएशन पहले होता था। ग्रेजुएशन के बाद पहले ग्रेजुएशन करेंगे, बीए बीकॉम एलएल बीएससी जो भी किया है, एंड उसके बाद 3 साल का एलएलबी होता था। दोनों ग्रेजुएट डिग्री होती थी। बट ग्रेजुएट इन लॉ जो है होने के लिए ग्रेजुएट इन अदर सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। वही मेरा निवेदन है कि ये बीएड का ग्रेजुएशन जो आप बता रहे ठीक है। हैं। अब आपका जवाब बताइए, जवाब में क्या लिखा है आपने? जवाब में मैंने सिर्फ सीधे निवेदन ये किया है कि एज पर द कंटेंशन ऑफ इन एडवर्टीजमेंट, माय लॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष होना। तो पिटिशनर हैज नॉट पजेस्ट द para 5, my lord. Entire petition pleadings made in submitted that the petitioner has failed to demonstrate that how the action orders impugned in the present petition are illegal and bad in law. It is submitted that with respect that where perusal of the advertisement filed by the petitioner along with WP so and P1, it can very well be seen that column educational qualification it was categorically mentioned that a light subject second division in graduation or equivalent here. In the instant case, admittedly, the petitioner was not possessing basic qualification of graduation in second division, and he has passed the graduation in third division. Therefore, his claim was rightly rejected by the respondent for on the ground that. And learned commissioner has also discussed in this aspect, my lord. Except P1 is the commissioner order, my lord. Page number 12.
पैरा 5 में अपील मेमो के साथ अपीलार्थी जिला पंचायत छिंदवाड़ा की ओर से संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 नियोजन हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें सामाजिक विज्ञान समूह के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उल्लेखित है। इस न्यायालय में भी अपीलार्थी द्वारा जो बीए भाग 3 परीक्षा वर्ष 2004 की जो डुप्लीकेट अंक सूची की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, उसके अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वह पास इन डिवीजन 3 परीक्षा फल के साथ कुल प्राप्तांक 807/1844.8% है। इस प्रकार डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा जारी आपका पक्षकार जो है वो संविदा शाला शिक्षक नहीं, कुछ और बड़ा आदमी बनने के लिए डेस्टिन्ड है। Lordship, he is a member of scheduled tribe community and he has been contesting and very hopeful that his matter will be considered in the only on the count ki 44.8% regarding rounding of a marks. I am not contesting, Lordship. I have understood that your contention is that this B.Ed degree be treated as second graduation. समकक्ष नहीं है, नहीं मैंने ये नहीं कर, मेरा ये कहना है लॉर्डशिप कि ये समकक्ष नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं, ना रिस्पोंडेंट कह रहे हैं, ना लर्नेड कमिश्नर कह रहे हैं. He has not said anything in his order dated 2/6/2011. Now I'll say that. लिखिएगा. This writ petition is filed by the petitioner being aggrieved of order dated 2nd June 2011 passed by the learned additional commissioner Jabalpur division Jabalpur in appeal case number 561/B-121/09-010 Satyabhan Kumre versus State of MP and others, whereby learned additional commissioner has rejected the appeal filed by the petitioner. Next paragraph. This is second round of litigation for the petitioner. Full stop. Earlier, petitioner had filed WP 37 of 2010 before the High Court, and in that writ petition, orders were passed on 12/5/2010 directing the petitioner to avail statutory alternative remedy of filing an appeal before the competent authority under the Madhya Pradesh Panchayat, appeal and revision rules. Full stop. Next paragraph. Copy of this order is available on record as Annexure P4. Next paragraph. Petitioner's contention is that an advertisement was issued by the Office of Chief Executive Officer, Jila Panchayat Chhindwara, for appointment of Samvida Shala Shikshak grade 2 in Social Studies group. Full stop. Petitioner was one of the candidates for such selection. Full stop. Petitioner's candidature is rejected on the ground that educational qualification mentioned in the advertisement is that a candidate should possess second division graduate degree in the related subject or equivalent. Full stop. Petitioner's contention is twofold. Namely, as far as her BA Part 3 degree is concerned, as is available on record on page 29 of the writ petition, it is evident that petitioner had secured third division. Full stop. Petitioner contested that her 44.8% marks be rounded off to 45% so that he may be treated as a third division graduate. Second division graduate. Full stop. Next paragraph. Second ground raised by the petitioner is that petitioner had obtained B.Ed degree in March-April 2007 and in that examination he has secured overall first division, second division, 59.7% in 59.71% in theory and 72% in practical examinations, and therefore having secured B.Ed degree in second division, that B.Ed degree should be
construed to be an equivalent qualification as per the stipulation in the advertisement, and respondent should have allowed the appeal, and appointment order should have been issued in favor of the petitioner. Next pair. Shri Manaswani Verma, learned government advocate for the state in his turn, submits the educational qualification provided in the advertisement is हिंदी में लिखिएगा संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष. Full stop. Reading this, it is submitted that petitioner is required to be a graduate or a degree equivalent to graduate in the concerned subject, that is social studies group in second division. Full stop. Degree of B.Ed is not in social studies group but is a degree in education which only shows that petitioner is trained to teach the subjects which are mentioned in her B.Ed degree. Full stop. B.Ed degree B.Ed degree is obtained after completing the graduation in the relevant subject, and since the baseline as mentioned in the advertisement is graduate degree in the concerned subject, therefore petitioner is required to show that petitioner possessed graduate degree in the concerned subject group in second division, and therefore B.Ed degree will be of no assistance. Next para. Srimati Smita Arora, learned counsel for the petitioner in her turn, drawing attention of this court to the B.Ed degree, submits that in group 2 it is mentioned that petitioner was instructed in the subject of, within inverted commas, teaching of social studies. Full stop. Thus, placing reliance on this stipulation in the B.Ed mark sheet, it is submitted that petitioner's candidature should have been considered for appointment as Samvida Shala Shikshak grade 2. Full stop. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the stipulation in the advertisement is graduate degree or equivalent in the concerned subject. Full stop. Concerned subject is social studies group. Full stop. Social studies group consists of following 5 subjects, namely political science, comma, economics, comma, history, comma, civics, comma, geography. Full stop. In fact, civics is civics is derived from political science. Full stop. Thus, petitioner is admittedly graduate, as is evident from her BA Part 3 mark sheet in economics and political science. Therefore, her graduation subjects are to be taken into consideration, and in the graduation, against the stipulation contained in the advertisement, petitioner had secured third division. Full stop. Rounding off to Percentage. convert third division to second division is not permissible. That is the prerogative of the chancellor of the university and not that of the examining body. Full stop. Therefore, petitioner a degree of BA has rightly been considered to be one under third division, which means that she did not fulfill the stipulation contained in the advertisement. Full stop. Rounding off would not have been of any help because that will not change the degree from third division to second division. Full stop. As far as B.Ed degree is concerned, comma, it is about teaching methodology. Full stop. The degree in itself is Bachelor in Education. That means that petitioner was instructed to
be a graduate in the methodology of teaching, full stop. That does not mean that if she had acquired skills to teach social studies, the degree of B.Ed should be treated to be a degree in social sciences group, because none of the subjects mentioned above, namely political science, economics, civics, history, or geography, form part of the mark sheet of B.Ed degree as has been enclosed by the petitioner. Therefore, बता दिया मैंने, लिख दिया, प्लीज अब बीच में इंटरप्ट मत करिए. Full stop. Therefore, teaching of social studies and degree in social studies where subjects of social studies are taught and a candidate attains proficiency in those subjects, namely political science, economics, history, civics, geography, is different from teaching of social studies, and therefore B.Ed degree cannot be said to be in consonance with the educational qualification requirements mentioned in the advertisement, full stop. Therefore, the order of the learned additional commissioner rejecting petitioner's candidature on the touchstone of the stipulations contained in the advertisement, as petitioner had failed to show that he possesses a degree in social sciences group with second division, cannot be faulted with petition fails and is dismissed. So just one more thing. Page number 34. He has also got. He has also qualified. मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल का संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2 की पात्रता परीक्षा 2008. अच्छा, लिख लीजिएगा उसमें. At this stage, Srimati Arora submits that petitioner has qualified in the मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 eligibility test 2008 as was conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal in social science. In social science group, full stop. There is no dispute to this proposition, but the fact of the matter is that the passing of that eligibility test entitled the petitioner to apply in terms of the advertisement as contained in annexure P2. ये क्या P1 है P2 है? P1 P1. कमिश्नर साहब का ऑर्डर कहाँ है? P1 है. P1 उसको भी P1, दो P1 होगा क्या? नहीं P1. सर ये जो सोशल स्टडीज का जो मैं बीएड कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो ये सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, तो हम सोशल स्टडीज ही रहे. ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. उसको टेस्ट करिएगा. क्या ये एडवर्टीजमेंट एनेक्शर क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट 25 पर. अच्छा, एडवर्टाइजमेंट. सर एडवर्टाइजमेंट इज एनेक्शर P3. R1 में मैंने लगाया. नहीं, एनेक्शर R1 में लगाया आपने? ठीक है, क्या लिखा? Yes, only entitled the petitioner to fill in the application form for appointment in as much as in the advertisement annexure R1, which is also part of the petition. It is mentioned as under, within inverted commas, व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, ये नोट कर लेना, पेज 25 पे मैंने कर दिया ये, ठीक है, के द्वारा 20/7/2008 को आयोजित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 की पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से जिला पंचायत इतने में, ठीक है. सो दैट वाज, ठीक है, इतना. Thus it is evident that qualifying the eligibility test entitled the petitioner to apply subject to the terms and conditions mentioned in the advertisement annexure R1. Full stop. That it's a qualifying the eligibility test in itself is not sufficient to seek appointment. Therefore, this ground too is not made out.